Hello everyone, welcome to Pratham Test Prep. My name is Ashish Bhargav and here we have with another episode of daily news analysis that we do from Monday to Friday. So majorly what we discuss in newspaper analysis, we discuss about all the important news, right? And the purpose to conduct such kind of session that students must be familiar about all these things, what is happening around us. So कैसे हैं आप सब? I hope that you guys are doing well. आप सब अच्छे होंगे एंड बेस्ट ऑफ लक. आज से CBSE बोर्ड की एग्ज़ाम स्टार्ट हुई है उनके लिए. सो make sure if you're new to the channel, please subscribe our channel and then do not forget to press the bell icon. So my friend, this is very important to understand कि डेली न्यूज़ एनालिसिस में हम डिफरेंट एस्पेक्ट के न्यूज़ को कवर करते हैं. नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, इकोनॉमी बेस्ड न्यूज़, स्पोर्ट्स बेस्ड न्यूज़, साइंस एंड टेक, पर्सनल न्यूज़, समिट्स एंड कॉन्फ्रेंस एंड मिसलेनियस. And here's a quote: let us remember one book, one pen, one child and one teacher that can change the world. And we'll ask you the questions of the day. It means आपसे 5 questions पूछे जाएंगे. That would be solely based on the newspaper जो अभी आप डिस्कस कर रहे हैं. And I hope कि आपको MCQ सॉल्व करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए. And here is quick tips. So with the help of mnemonics, we'll learn lots of things. पहला जो आर्टिकल है आपके सामने, which is taken from or extracted from the Hindu. MSP issues what government committee set up in 2022 has done so far. So the farmers are again protesting in the Delhi NCR, and the measure of the border has been sealed. So a major demand of the farmers who broke through the police barricades and braved tear gas on the way of New Delhi that was on the Wednesday. So what is the MSP? What was the committee has done so far? So this time, at times when a committee appointed by the center in July 2022 में, July 2022 में center को establish किया गया था, right, to deliberate on ways to make MSP more effective and transparent. ये जो panel थी, this panel was somehow constituted 7 months after farmers gathered at Delhi borders that called off their eye-long protest after the Prime Minister Modi announced the repeal of the farm laws. That we will not discuss again what was the farm law because it has been already repealed by the Parliament. So the committee terms of reference do not include a legal guarantee of minimum support price MSP. So what was the committee, and we should know what was the purpose of the panel and what was the mandate that discussed that time. So जिस टाइम में कमेटी बनाई गई थी, which was set up to promote zero budget based farming to change crop pattern, keeping in the mind to changing needs of the country and to make minimum support price more effective and transparent. That was notified by the Union Ministry of Agriculture and Farmers Welfare on July 18, 2022. ये बात है जुलाई 18, 2022 की. So इसमें जो है इस कमेटी में 26 members थे. How many members in that committee? 26 members is headed by Sanjay Agrawal, एक foreign agriculture secretary थे. And its another members are from Niti Aayog, which is National Institution for Transforming India. इसमें एग्रीकल्चर रमेश चंद, बहुत सारे एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट थे एंड अवार्ड विनिंग फार्मर्स, बहुत सारे नाम थे इसमें. उसके बाद इसमें बात की गई, एक मेंबर इसमें थे व्हिच इज द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस. सो 3 पर्सन दैट वर फ्रॉम द एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशन. सो अंडर द कैटेगरी ऑफ फार्मर्स रिप्रेजेंटेटिव्स, द कमिटी हैड 3 पोजीशन फॉर मेंबर्स ऑफ SKM एंड द अम्ब्रेला बॉडी. सो पर्पस क्या था पैनल का? अब देखो 2021 में जब PM मोदी ने अनाउंस की थी गवर्नमेंट को डिसाइड करने की विड्रॉल द 3 फार्म लॉज, और वो 3 फार्मर्स लॉ बस आपको नाम बता देता हूँ. पहला था द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020, द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन अग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट 2020 एंड द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 2020. ये जो है गवर्नमेंट ने उस टाइम में, पार्लियामेंट वाज नॉट इन द सेशन, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने ऑर्डिनेंस पास की थी, राइट. सो अ कमिटी विल बी कॉन्स्टिट्यूट टू डिसाइड ऑन मैटर्स लाइक प्रमोशन ऑफ जीरो बजट फार्मिंग, दैट इज नेचुरल फार्मिंग,
scientifically change the crop pattern keeping in mind to changing requirement of the country, right? तो MSP को उस टाइम में बात की कि that would be more effective and transparent, and the committee will include a representatives of the central government, state government, farmers से, agriculture scientists से, और उसमें मैंडेट किया था इस पैनल का। द नोटिफिकेशन में कमेटी की मैटर थी सब्जेक्ट मैटर दैट हैज़ 3 पॉइंट। पहला MSP, थर्ड नेचुरल फार्मिंग एंड क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। So on the MSP, the committee has been asked for suggestions to make available MSP to farmers to the country by making the system more effective and transparent, right? तो जो कमेटी थी on MSP had its first meetings on August 2022 में वहाँ पे रखी। फिर एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री जो थे तोमर साहब जी ने उन्होंने बताया कि रेगुलर बेसिस एक्टिवली टू डेलिब्रेट ऑन द सब्जेक्ट मैटर असाइन ऑन इट। जुलाई 18 को notification did not specify the tenure of Sanjay Agrawal committee, so therefore the committee has no deadline by which is required to present its report. That was the main issue that is going on, जिसकी वजह से किसान अभी मोर्चा कर रहे हैं। सेकेंड आर्टिकल आपका क्या कहता है? What did Trump say about NATO funding and what is Article 5? देखो, फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने रेज्ड किया storm of criticism from the White House and 2 of top officials for suggestion he would not defend NATO allies. NATO है क्या? देखो, ये NATO which is North Atlantic Treaty Organization. So NATO is founded in 1949 to counter the Soviet Union, which Cold War tensions rising. The North Atlantic Treaty Organization is a political and military alliance of countries from North America and Europe. So कौन कौन से कंट्री हैं NATO में? NATO currently have 31 members. NATO में भी कितने मेंबर्स हैं? 31 मेंबर्स हैं। सो मोस्ट ऑफ देम आर यूरोपियन नेशंस प्लस द यूनाइटेड स्टेट एंड कनाडा। सो न्यूएस्ट मेंबर जो है फिनलैंड है, which joined in last April. So what did Trump say about NATO? Or as the US President Trump often blasted NATO and members such as Germany, accusing them of not paying enough for their own defense and relying on the Washington to protect them. How is NATO funded? Trump की जो statement थी, that gives the impressions that the alliance is like a club with membership fee, but जो NATO है that operates differently. So it has some common funds to which all members contribute. So the vast bulk of its strength comes from members' own nation defense spending. What is NATO Articles 5? Article 5 जो है treaty का, उसमें mention है कि NATO members declare that an armed attack against one or more of them in Europe or North America shall be considered an attack against them all. So they agreed they would assist the party or parties so attacked by taking such actions as deems necessary, including the use of armed force. तो बेसिकली एक मिलिट्री अलाइंस है ये। तो ट्रंप का ये कहना है कि जो अलाइंस है उसमें जितने भी फंड मिलती है जितने भी कंट्रीज से उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। एक आपने सुनी होगी हाइपर लूप, ठीक है, जिसमें कि लूप में आप ट्रैवल करेंगे। सो नाउ इंडिया हैज सक्सेसफुली टेस्टेड द हाप्स प्रोटोकॉल, हाप्स prototype. So these solar powers vehicles that can be used for surveillance, monitoring and disaster management and enjoy many significant advantage over drones and satellite. So in a major technology breakthrough, Bangalore-based National Aerospace Laboratory NAL, National Aerospace Laboratory NAL
last week successfully flew a prototype, a new generation unarmed aerial vehicle, UAV. So this was no ordinary UAV. This one can fly a great height, about 20 kilometers over the ground, and runs entirely on solar power, and that can remain in the air for months off end. Such UAV belongs to a class of flying object called high altitude pseudo satellite vehicle. ऐसे नहीं कि HAPS का आपको फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, which is high altitude pseudo satellite vehicles. So HAPS vehicles on higher altitude long endurance vehicle HAIL. So इसके करने से ऐसा क्या होगा कि जितने भी हम सर्विलेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, मॉनिटरिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं. So the kind of jobs what HAPS are meant to do are currently done by UAV and satellites. Both have certain limitations, right? और आपको बस मेजर चीज़ें, द इम्पॉर्टेंट टेकअवेज दैट यू शुड रिमेंबर कि इसको HAPS का फुल फॉर्म क्या है, ये प्रोटोटाइप क्या होते हैं, सोलर पावर्ड होते हैं, इसको किसने टेस्टेड किया, विच इज़ नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी NAL, राइट, लास्ट वीक. एन अरेबियन वैलेंटाइन, यहाँ पे क्या मेंशन की गई है, जो अभी रिसेंटली आबू धाबी में जो स्वामीनारायण टेम्पल है, that reflects an important new trend that is not, fully appreciated in India. So this outflow of radical Islamic ideas from Arabia in the last quarter of the 20th century that had negatively affected the subcontinent to the religious conservatism at home and the export of radicalism abroad in Arabia, the yielding place, especially in the UAE and Saudi Arabia, to growing religious tolerance, the unfolding social and religious reforms in Arabia that would hopefully dampen the rise of religious extremism across the subcontinent and help restore harmony between different region and sects. इसमें बेसिकली मेंशन की गई है, सी राधा मोहन जी की आर्टिकल है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसमें आपको क्या चीज़ें समझना कि जितने भी चेंजेस हैं, हाउ इंडिया एंड सऊदी अरेबिया डील्स विद ईच अदर टुडे, द न्यू टर्म्स ऑफ इंटीमेंट विद अरेबियन गल्फ constitute one of the most significant gains from Indian diplomacy in recent decades. 5 factors underline this transaction. The first two diplomatic for a long time, जो Middle East है, right, that did not figure in the political parties on Indian diplomacy. Consider the following that जो 10 years का tenure था of the UPA rule, Prime Minister Manmohan Singh traveled to the Middle East only 4 times, and 2 of those visits were to attend non-aligned summits in Cairo and Tehran. So, इससे इंडिया को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा. In short, IIT Madras Zanzibar, what does it mean to be an IIT outside India? So, the IITs that were conceived and established as an contributors to the human resource development of the nation. This is iterated in the Indian foundation of their name, the Indian Institute of Technology, and the sign in the main building IIT Kharagpur that reads dedication to the service of the nation. जो 4 IITs हैं, Indian Institute of Technology, in 4 parts of the country, envisaged in the Nalini Ranjan Sarkar Committee report दी थी 1940 में, that emission a new technological geography and the idea of India united by technology, unlike the older technology institution in Madras, Roorkee and Havras, Shibpur, and the IITs that were intended as Indian institution of axiomatic Indianize. But जितने भी IITs हैं यार अभी at present that are admitting foreign students and foreign universities are setting up campus in India, जो S. Radhakrishnan की कमेटी, K. Radhakrishnan की कमेटी थी, that has recommended for the setting of use of IIT campus overseas. So the IITs are territorial nation expressions of post-colonial science. Western India की बात करें यहाँ पे तो initial Western guidance was necessary for the establishment of IIT, but the Indian character was never in doubt. Zanzibar campus of IIT Madras that continues to be Indian, not African or
Tanzanians in the Indian Ocean of the East African mainland. जब IIT कानपुर को वहाँ पे मॉडल को स्टैब्लिश किया गया था, that was after the MIT, there was a debate on whether the new institute would be an MIT in India for an Indian MIT. And needless to say, the latter prevailed as an Indianized technology. So that is a very good thing for our country, because IIT Madras जो campus है Zanzibar में is not a Zanzibar Institute of Technology. It is mentored by the IIT Madras. Now the next article is here, jail and bail under UAPA. The very first thing that you should know about what is the UAPA is, which is Unlawful Activities Prevention Act. Unlawful Activities Prevention Act. So यहाँ पे क्यों इसकी बात हो रही है, रीज़न क्या है इसके पीछे, देखो सेक्शन 43 जो है, सेक्शन 43D of the UAPA reads, notwithstanding anything contained in the code, no person accused of an offence punishable under chapter 4 and 6 of this act shall be in the custody to be released on bail and on his own bond unless the public prosecutor has been given an opportunity to being heard on the applicant for such released. तो यहाँ पे एक चीज़ समझो कि जो हमारा अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पे बेल को डिनाई किया टू द गुरविंदर सिंह को. उसके बाद ये आर्टिकल आनी शुरू हो गई जो खालिस्तानी मॉडल्स को सपोर्ट करता था उस टाइम में. सो सिंह वॉज अरेस्टेड व्हेन ही वॉज फाउंड हैंगिंग क्लॉथ बैनर्स विद खालिस्तान जिंदाबाद एंड ऑल, खालिस्तान रेफरेंडम 2022 में ऑन द इन पंजाब. So while the bar for granting bail under the UAPA is higher than ordinary criminal law, so there are some cases with court have granted bail. So very first thing that you should know, how have court interpreted section 43D of the UAPA, and the second thing that you should know, the why do courts deny bail in the most cases despite some ruling that have raised in the bar. तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी सेक्शन 43 एंड 5 के बारे में. 43 जो 43D क्लॉज 5 में जो मेंशन है, यहाँ पे क्या मेंशन की गई है, इसमें मेंशन ये है कि जो एक्यूज्ड पर्सन है शैल नॉट बी रिलीज ऑन बेल ऑन द ओन बाउंड इफ द कोर्ट और अ पेरिजुअल ऑफ द केस डायरी ऑफ द रिपोर्ट. जो लॉ है essentially says that while relying on the police version, the case diary and police report, the accused must show the court that it is unreasonable to believe that the accusations of prima facie is true. So उसके बाद अगर हम बेल की बात, 2019 में क्या ऐसा कुछ हुआ था जिसमें सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट को अगर बात करें, 2019 में 2 जज थे सुप्रीम कोर्ट के, that bench were headed by the Justice A.M. Kaniwar that ruled in Zuhari Ahmed Shah versus NIA. उसमें क्या बताया था सॉरी उसमें सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट ये थी कि जो बेल ग्रांट करेंगे यूएपीए के अकॉर्डिंग, जो कोर्ट है मस्ट नॉट एग्जामिन द एविडेंस बट ओनली एक्सेप्ट इट द फेस वैल्यू. सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में जो हियरिंग दी थी उसमें क्या था, अगेंस्ट दिल्ली हाई कोर्ट रूलिंग बाय अ बेंच हेडेड बाय जस्टिस एस मुरलीधर दैट ग्रांटिंग बेल टू अ कश्मीरी बिजनेसमैन. तो ये सारी चीज़ें जो है 2021 में भी ये केस थी, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पे जो एक केस स्टडी थी वहाँ पे इन चीज़ों को मेंशन करा जो बेल है उसमें. सो द बार फॉर ग्रांटिंग बेल अंडर यूएपीए इज़ हायर द ऑर्डिनरी क्रिमिनल लॉ, राइट. एंड जो 2 सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस थे द सेम स्ट्रेंथ हैव टेकन डिफरेंट व्यूज ऑन व्हाट द प्राइमा फेसी टेस्ट ऑन द बेल शुड बी. नेक्स्ट इज हियर क्विक टिप्स. क्विक टिप्स में क्या हम सीखेंगे, क्विक टिप्स में विद द हेल्प ऑफ नेमोनिक्स विल लर्न लॉट्स ऑफ थिंग. अब वो क्या है देखो, क्विक टिप्स में परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएनएससी, मतलब उसमें क्या है फ्रेस, फ्रांस, रशिया, अमेरिका, चाइना एंड इंग्लैंड, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स के बारे में है. ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है यूएन की, देखो
उसमें फेसर्स, जिसमें है फ्रेंच, अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, रशियन, स्पेनिश। दिल्ली सल्तनत के किंग को लर्न करने के लिए क्या लर्न करें? सब खाओ टमाटर, सब लो मज़े। एस स्टैंड फॉर स्लीव, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी एंड मुगल्स। मैंने ऐसे पिक्टोरियल फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश की है। सब खाओ टमाटर, सब लो मज़े, स्टैंड फॉर स्लीव, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी एंड मुगल्स। Here is the important articles of the Constitution. Article 360 are talking about procedure of constitutional amendment. देखो Article 15 talking about discrimination, 17 talking about untouchability, 19 freedom of speech and expression. Article 124 of the Supreme Court. देखो नोट जो बनाते हैं कोई भी important articles के लिए with the help of mind maps, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। कि आप इस मैप में आप देख सकते हैं कि कितने शॉर्ट फ्रेम है, और इसको आप अपने स्टडी टेबल के सामने भी रख सकते हैं, सो दैट इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू इन अ क्रक्स फॉर्म, सो दैट आप इसको ईजी वे में लर्न कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ योर एग्जाम, बिकॉज उस टाइम में बहुत ज़्यादा कॉन्टेंट नहीं होनी चाहिए। द कॉन्टेंट शुड बी लेस एंड द रिविजन शुड बी मोर, राइट। सो जैसे आर्टिकल 51A है टॉकिंग अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, 343, 351 इज टॉकिंग अबाउट हिंदी लैंग्वेज, and Article 24 talking about children below 14 years cannot work. Emergency से 3 आर्टिकल हैं, 56, 56, 60। इसमें आप 4 को ऐड करोगे, फर्स्ट है नेशनल इमरजेंसी, 56 स्टेट इमरजेंसी, आर्टिकल 360 इज फाइनेंस इमरजेंसी। नाउ इट्स टाइम टू क्वेश्चन ऑफ द डे। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आर्टिकल्स दी हुई हैं, अब बताओ इसमें क्या करेक्ट है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी उत्तराखंड में आपने देखा होगा स्टेट गवर्नमेंट ने पास की वहाँ पे, that provide for one law for the entire country applicable for the all religious communities in their personal matters. So basically इसमें एक स्टेटमेंट गलत है, yes, स्टेटमेंट सेकेंड इज इनकरेक्ट वन। So UCC provides for one law for the entire country applicable for all religious communities in their personal matters, जिसमें कि marriage, divorce, inheritance, adoption, etc. So all Hindus of the country are not governed by one law. और जितने भी मुस्लिम्स हैं, जितने भी क्रिश्चियंस हैं, उनके लिए भी एक लॉ नहीं है, ठीक है। So for instance, in the northeast there are more than 200 tribes, their own varied customary laws. So in the constitution itself protect local customs in Nagaland, जो नागा ट्राइब्स होती हैं। सिमिलर प्रोटेक्शंस आर एंजॉयड बाय मेघालय एंड मिजोरम, ठीक है। और जो 6 शेड्यूल के स्टेट्स हैं वहाँ भी अलग लॉज बनाई हुई हैं, ठीक है। सो व्हाट डज द कॉन्स्टिट्यूशन से अबाउट यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड? सो आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट लेज डाउन द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर अ यूसीसी फॉर सिटीजन्स थ्रू द टेरिटरी ऑफ इंडिया, राइट। और वो DPSP में आता है, विच इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी विच इज नॉट इन्फोर्सिबल बाय कोर्ट। Corruption Perception Index is released by Economics Intelligence Unit, Oxfam International, Transparency International, and United Nations Office on Drugs and Crime. So the right answer is Transparency International. So India has been ranked 93rd out of 180 countries in the Corruption Perception Index for 2023. और यहाँ पे जो Corruption Perception Index है वो evaluate करता है country based on their perceived level of public sector corruption using a scale from 0 to 100. 0 which means highly corrupt and 100 which means very clean. So the Grammy Award honors exceptional accomplishments in the field of what? Literature, स्पोर्ट्स, म्यूज़िक एंड पब्लिक सर्विस। अभी एक आर्टिकल आपने डिस्कस किया था, हमने डिस्कस की ग्रैमी अवार्ड्स के बारे में, तो अब ये म्यूज़िक के लिए देते हैं। Consider the following statements about Satyendranath Bose. He was an Indian mathematician and physicist. Bose Einstein statistics were formulated by him. He collaborated with Albert Einstein in the development of Bose-Einstein condensate. He won the Nobel Prize in Physics for his work on particle physics. कितने इसमें करेक्ट हैं?
तो स्टेटमेंट 4 हमारा इनकरेक्ट है. Satyendra Bose was born on January 1st, 1894 and passing away in February 4, 1974. Was an eminent Indian mathematician and physicist renowned for his collaboration with Albert Einstein developing a theory concerning the gas-like properties of electromagnetic radiation. The last question, who of the following had false deciphered the edicts of Emperor Ashoka? और इसका right answer है James Princip. So Ashoka, he was the son of Bindusar. His other name was Devnampiya and Piyadasi. He was crowned to the throne of 269 BC. He was famous for the Battle of Kalinga, which is present day in Odisha. So this is all about the session, dear students, and I hope that you enjoyed the session a lot. If you have any questions regarding this, please let me know in the comment section. And make sure if you are new in this channel, please subscribe our channel and do not forget to press the bell icon so you will get the notification of all our Pratham Test Prep mentors. We'll meet you tomorrow for the same time. Till then, bye-bye and take care.